Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. कि कोई क्या करता है अपने घर में हमें क्या लेना देना. I never said that she's a friend of mine, but I don't think I should be giving advice to someone. They may not necessarily feel the same way about you, and that's okay. I mean, something that happened in 2003, and we are sitting in 2015. Deepika is a great friend of yours, and she's been commenting. I never said that she's a friend of mine. I never said that she's a friend of mine. But you've been, you've known each other. Yeah, she's a colleague. You've known each other, you're colleagues, and the fact that she's been, a little enraged about this whole thing about her pictures getting carried in newspapers, and she's also commented on Facebook. And you just said, Fawad, that it's high time that a lot of people stopped being obnoxious. So, any comments? Any comments? Just in support for your media. Well, as long as women stop objectifying themselves, people will stop objectifying them. Deepika Padukone is also making her debut in Cannes under the same brand L'Oréal Paris. Yes. So L'Oréal Paris, are we allowed to say that? L'Oréal Paris, I mentioned. So any advice or any wishes you would like to give her? I mean, I hope she has a good time. Because I don't think I should be giving advice to someone. I don't think I should be giving advice to someone who has already walked several international red carpets. See, the thing is कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई हो और क्या कहा गया हो, वो भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए. और what actors say is not gospel's truth ना. Sometimes we also visit our statements and see कि I could have let go of the, एक गाना सुना है आपने, बॉबी का गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए. वो करना पड़ेगा. अरे मेरे को फिनिश करने दो ना मेरा आंसर. तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी. आई एम जस्ट अ 28-year-old girl who sometimes says things she likes. Sometimes I might visit my statement and feel कि okay, I could have skipped it. तो वैसे ही है. तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं, बेवजह हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है. तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं, बेवजह हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है. ये मैटर करता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द 18. ठीक है, तो आप प्लीज़ फिल्म देखिएगा. और बाकी कोई क्या करता है अपने घर में हमें क्या लेना देना. अरे प्लीज, हम क्यों कमरे में किसी से के साथ बंद हो. कमरे में बंद हो. कटरीना एंड उन्होंने कहा था कि आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, और आपने इतने अच्छे से उनके ट्वीट किया था, आपको बहुत शो अच्छा लगा था. तो आपके हिसाब से बिग स्टार्स जो रहते टॉप एक्ट्रेसेस, इनके बीच में अभी भी कंपटीशन ऐसे चलता है? आई वुडंट से कंपटीशन. मैं यही कहूँगी कि कभी कभी you feel a certain way about some people, and they may not necessarily feel the same way about you, and that's okay. I mean, I'm extremely fond of both of them, professionally and personally, and I wish them all the best. Sonam, Kangana recently made a comment on Star Kids and nepotism, how it's there in the industry. Yeah. And Ali also gave a response to that. So do you want to say anything, considering that you also have a... I don't even know what Kangana said. मैं तो travel कर रही हूँ आजकल. What has she said? She keeps saying things all the time. I don't know what she said. She keeps saying things all the time. I don't know what she said. She keeps saying things all the time. I don't know what she said. में सलमान ने भी विजिट किया था, बट जो पता चला था कि जब सलमान वहाँ पे गए थे तो भी थोड़ा सा हट गए थे वहाँ से. क्या ऐसा हुआ था? मैं क्या बोलूँ, what have I got to say in this? मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें. Something that happened in 2003 and we are sitting in 2015. Do you remember anything that happened in 2003? Happened. I'm living life. Enjoy. अभी भी है, like सलमान शाहरुख एक हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, हैप्पीली बॉलीवुड एकदम हैप्पी फैमिली हो गया. लेकिन क्या I think you're asking the wrong person. विवेक जी, जिस तरह से आप अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे फिल्मों की बात हो,
तो आप चाहते हैं कि अब पुरानी तलखियाँ जिन लोगों के साथ आपकी थी, सलमान आजकल शाहरुख के साथ भी पैचअप कर, तो आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें आपके री इन्वेंशन में, नए जो आपका नया करियर शुरू हो? Alright guys, thank you so much.